Okay, let's start with another topic, that is importance of minerals in animal health and production, rather reproduction, and in every aspect of livestock and poultry. This is not a new topic for you. Uh, you must have been studying minerals from starting from class 6th, 7th, or 8th, and even in human nutrition for your welfare as well. So, if we talk about what is mineral, so this is inorganic component of diet, which is represented by total as in case of proximate principle. As in last all, I think third class, I have elaborated proximate principle, and there are some terminology to represent nutrient in each in every way, like protein in crude protein, protein assigned as crude protein, fat as ether extract. Likewise, total mineral compound of a feed or any biological sample is represented by total S, and total S is obtained by burning any biological sample, any feed sample, or any sample at 600 degrees centigrade in muffle furnace to obtain total S, and it is said, or it represents total minerals present in particular biological sample. So, uh, what is the importance of minerals and why we should study minerals in livestock and perform? Because minerals perform essential functions and it must be present in food. There are two compounds, or there are two elements. Some elements or some nutrients are being synthesized or being converted, being metabolized by biological system or animal system, but some element, some minerals or some nutrients are not being synthesized by animal system, like vitamin B complex. It can be synthesized by ruminant, by ruminant microbes. So, but in case of minerals, it can't be synthesized by animal, therefore it must be present in any food. uh, this uh, concentration of minerals vary in quantity depending upon their function, depending on their activity. So this is simply a representation of calcium in total body minerals 46%, phosphorus 29%, magnesium, sodium chloride is at 25%, and micro minerals that is in 3%. So this is total representation of, or rather distribution of minerals in class level. Total body minerals is distributed in this way. And you must be knowing that calcium represents the maximum part because this is part of bone, skeleton, exoskeleton system. So, if we talk about essential minerals, can any one of you define what is essential mineral? आप में से कोई बताएगा essential mineral क्या होता है? Essential mineral किसको कहते हैं? सुन पा रहे हो ना सभी लोग आप? हेलो? Yes, sir. सुन पा रहे हैं। एसेंशियल मिनरल किसको कहते हैं? मिनरल्स आपने पढ़ लिया कि जितने भी टोटल एस में प्रेजेंट होंगे उसको मिनरल्स हमने कह लिए, या एलिमेंट आपने पढ़ेंगे, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सिलिकॉन, जितने भी हैं सब आपने पढ़े। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल? ओके, एसेंशियल एसेंशियल किसको कहते हैं आप? मैं आपके पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में या किसी भी फैमिली लाइफ में पूछा हूँ कि किसको आप एसेंशियल मानते हो, तो हाउ विल यू डिफाइन? हु इज एसेंशियल फॉर यू? व्हाट इज एसेंशियल फॉर यू? और एसेंशियल का कैसे डिफाइन करोगे? क्विक। जो भी बॉडी के लिए नेसेसरी हो। बॉडी के लिए नेसेसरी हो, सब कुछ नेसेसरी है तो सब एसेंशियल हो गया। कैसे कहेंगे हम सब कुछ नेसेसरी है, कैसे डिफाइन करेंगे? तब तो उसको नेसेसरी मिनरल जो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते लेकिन बाहर से चाहिए। कुछ सिंथेसाइज नहीं कर सकते लेकिन मस्ट चाहिए। और कुछ? और कुछ? और कोई? मैं जनरल पूछ रहा हूँ कि एसेंशियली कैसे करेंगे कि ये मेरे लाइफ में बहुत एसेंशियल है, कोई रिश्ता मेरे लिए बहुत एसेंशियल है, हाउ विल यू डिफाइन दैट?
उसकी उसकी सिंपल डिफिनेशन समझने की कोशिश करो. बट आई यूज टू टेल कि एसेंशियलिटी, इसका भी आवाज़ आ रहा, थोड़ा बंद कर लो, पीछे से म्यूट कर लो. एसेंशियलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे एसेंशियलिटी का पता नहीं चलता है. आपके लिए जो बहुत एसेंशियल है ना, उसको कुछ देर के लिए अपने जीवन से हटा दो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, कुछ और चीज़ के लिए, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो पैसा हो, या कुछ भी हो, तो उसकी कमी होने लगे, और उसके कमी होने से आपके जीवन में, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगे. ठीक है, दो तीन कंडीशन बताया. पहला चीज़ कि वो इसेंशियल है, इसेंशियलिटी का कैसे करेंगे? अगर उसको हटा देंगे तो उससे जो जुड़े हुए जो फंक्शंस हैं वो अफेक्टेड होने लगे, तभी तो आप इसेंशियल कहेंगे. कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है सारा कुछ इसेंशियल है, लेकिन उसको आप अपने जीवन से निकाल देते हो, तो भी जीवन आपका सही चलने लगता है. इसका मतलब वो इसेंशियल नहीं था. that was not very essential. तो एक एसेंशियलिटी का पहला क्या हुआ कि जो एसेंशियल था उसको आप अपने जीवन से हटा दो, या किसी सिस्टम से हटा दो. हटाने के बाद वो क्या करे कि जिस भी चीज़ के लिए वो बना हुआ था, वो आपके वो डिस्टर्ब होने लगे. दो कंडीशन होंगे. एंड थर्ड वन, कि जब फिर से उसको ले आओ, हाँ, किसी किसी दोस्त की ऐसी ज़रूरत होती है कि उसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके बिना बात किए नहीं रह सकते. दुश्मनी हो गई, जो भी हो गया, मूड आपका ख़राब होने लगा, आपका सारा तबीयत ख़राब होने लगा, फिर आपके जीवन में आ गया वो, तो आप सब फिर से ठीक होने लगे. तो एसेंशियल मिनरल्स और एसेंशियल सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल if this that minerals or that plant that element is being removed, that biological functions related to that minerals is severely affected. And another condition is, if you add that mineral, if you add that compound in your diet, in animal diet, that functions will be regularized or something will be of normal. समझ गए आप कि कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ थी जिसको हटा दिया तो उससे हमारे फंक्शंस जो है वो ख़राब होने लगे, कुछ ना कुछ चेंज होने लगा. चेंज होने के बाद डिजीज भी हो सकता है, उसको जैसे ही आपने फिर डाइट में डाल दिया तो फिर से फिर ठीक हो गया. दैट काइंड ऑफ मिनरल कैन बी एज एसेंशियल मिनरल. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? आ गया समझ में? इस तरह से Yes, डिफाइन. sir. या, very good. That essential minerals can be categorized in two ways, or other two parts. One is major minerals, another one is minor mineral. Major sometimes macro, that is bada. Minor micro, that is chota. Sorry, this is 15 not 5. ये 15 होगा. मैं इसको थोड़ा सा read कर रहा हूँ. This is typo error. Okay, it can be more than 15. So major minerals 7, and these 7 minerals are how you will define major minerals or micro minerals. That concentration is higher as compared to micro minerals. Again, this is comparative terms. Never, you can never say that minor minerals is not more essential or not less essential as compared to major mineral. But this categorization is totally based on concentration. हाई कंसंट्रेशन दैट आर प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन पर के जी, यानी बॉडी में जो ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, मोर देन 70 मिलीग्राम पर के जी वाला वेट अगर होगा, देन इट कैन बी कैटेगराइज एज मेजर मिनरल्स. बट अगेन आई यूज टू से, आई से both minerals are essential, equally essential. Sometimes micro minerals are, whether minor minerals are more essential than major minerals. As for example, iron आपके body से निकाल दिया, your whole system will be seized. So these are some major minerals like calcium, phosphorus, magnesium, sodium, potassium, chlorine, and sulfur. Many a times in Viva I ask, just enumerate names of major minerals. Students start telling nitrogen, carbon. Please keep in mind, this is minerals, not I am asking minerals. कई बार देखा है, कई बार वो गड़बड़ हुई. But these seven minerals, calcium, phosphorus, magnesium, sodium, potassium, chlorine, and sulfur are major minerals. Another one is, again, counterpart is trace mineral. Trace minerals means this is present in less than 70 मिलीग्राम पर के जी लाइव वेट. पुरानी बुक में आप कई बार 50 मिलीग्राम पर के जी. इसके दूसरे भी क्लासिफिकेशन है कि इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है. जनरली डाइटरी रिक्वायरमेंट जो है वो मेजर मिनरल्स की इन हायर कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम or in gram, but in case of minor minerals or trace mineral,
requirement is very less, that is microgram, picogram, or rather in point milligram there. But again, I am telling these are physiologically equally important as compared to major mineral. So classification is based on concentration, not on the function. So these are some trace minerals: iron, copper, cobalt, manganese, zinc, iodine, selenium, molybdenum, chromium, chlorine, iridium. These are some rarely. सो इफ इट हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, एक एक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, बट दिस इज जनरल फंक्शंस. How can you categorize the functions of, or then in 2 marks question or 1 marks, if you ask functions of or general functions of minerals, you can write these 4 or 5 functions, because for calcium, phosphorus, and each and every minerals, there are many functions, there are many diseases related to that. So, but in short, in generalized way, uh, minerals have these functions. Structure, this means calcium, phosphorus, magnesium, these are structural component of a body, of a biological system, like calcium, phosphorus, and magnesium in bone and teeth, phosphorus and sulfurs in muscle protein or amino acid. Another one is physiological, like electrolytic balance, osmotic pressure, acid base balance, membrane permeability. Some minerals are responsible for conduction of physiological or normal physiological functions, like sodium, potassium, chlorine, calcium, magnesium. There are many. There are many. Third one is catalytic, is like enzymes and endocrine system. Somewhere, some enzymes or some minerals are associated with coenzymes, cofactors. You must have a study cofactor and coenzyme. There is some difference between coenzyme and cofactor. So catalytic functions, in the form of catalytic function, many minerals are associated with enzyme, unless or until that minerals is not attached with that minerals, that enzymes, enzymes will not work properly. Sometimes it is also associated with vitamins. You must have studied one vitamin. Just tell me विटामिन मिनरल इंटर रिलेशनशिप. कोई एक विटामिन का नाम बताइए जिसमें मिनरल्स होते हैं. कोई एक विटामिन का नाम बताइए, पढ़ा होगा आपने. हेलो अनीशा. यस सर. हाँ बताइए. एक 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 विटामिन का नाम बताइए जिसमें मिनरल होता है. सर नहीं पता. अंकित. सर आई थिंक सर नियासिन. नियासिन में कौन सा मिनरल होता है? एनीबॉडी? सर उसमें मनिका, गिरिजा, नेहा, नीलेश, सचिन. एनीवे आपने जरूर पढ़ा होगा. विटामिन B12 पढ़ा है? यस सर. उसका क्या होता है जेनेरिक नेम? साइनोकोबालामिन. क्या नाम है? अच्छा यस सर, साइनोकोबालामिन. तो उसमें कौन सा मिनरल हुआ? आई थिंक अब तो बताओ. कोबाल्ट. कोबाल्ट. कोबाल्ट होगा. हाँ, तो ये है. तो आगे जब हम लोग बात करेंगे तो 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं. समटाइम्स या रेदर इन ईच एंड एवरी एग्जाम यू विल फाइंड वन क्वेश्चन, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन विटामिन एंड मिनरल. ठीक है, विटामिन और मिनरल में इंटर रिलेशनशिप पूछा जाता है. एक तो आपको याद आ गया, आगे भी पढ़िएगा आप. अगर जैसे सेलेनियम और विटामिन ई के इंटर रिलेशनशिप, सब में वो इंटीग्रल पार्ट होता है और सब में वो फंक्शनल फंक्शंस करता है. सो जस्ट दीज आर सम एग्जांपल्स. In due course of classes you will be remembering this one. Iron, like iron you must be knowing that this is a part of succinic dehydrogenase. hemoglobin के पार्ट होते हैं, catalyze के पार्ट. कॉपर, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, दैट इज टर्मिनल ऑक्सीडेज, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज. और कुछ याद हो ना हो, फास्टेस्ट एंजाइम कौन से हैं? विच वन इज द फास्टेस्ट एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज. कार्बोनिक. एंड दैट कार्बोनिक एनहाइड्रेज कंटेन्स जिंक. That carbonic anhydrase contains zinc. So these are some our there are many. These minerals are associated with enzymes, and these enzymes can't work without these minerals. So this helps in catalytic way. Another one is regulatory. Sometimes it
it acts as regulator like gene ट्रांसलेशनल सेक्शन में काम आता है ना. इन्फ्लुएंस ऑफ थायरोक्सिन. थायरोक्सिन के लिए आपने जब तक आयोडीन नहीं होगा तो क्या होगा, थायरोक्सिन काम नहीं करेगा. तो इन दिस वे दिस एक्ट्स एज रेगुलेटरी फंक्शंस. इवन जो ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा होगा, sometimes some minerals are essential. Another way, this is component of biomolecules, biologically important compounds, very much important, like iron, hemoglobin. In hemoglobin, iron is required. Like in vitamin B12, cobalt is required. In thyroxine hormone, iodine is required. So without iron, you can't imagine hemoglobin. Without cobalt, you can't imagine B12. Likewise, without iodine, you can't thyroxine. So some biologically important, or rather most important compounds are there, and the minerals are integral part of it. Now come to dietary source of minerals. So what are the dietary source of minerals? Means how an animal or livestock system will obtain these minerals. Because we have studied how much essential these minerals are. So fulfill the requirement of this essential minerals, how to fulfill the requirement. So it may be in concentrated feed and forage. Concentrated feed means like maize, wheat, or any cake or somewhere. So this should be part of, because each and every ingredient contains some minerals. अगर आप चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो उसमें कुछ ना कोई मिनरल्स हैं, कुछ ना कुछ वाइटामिन्स हैं. ये अलग बात है कि उसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है, किसी में बहुत ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा. एज फॉर एग्जाम्पल व्हीट ब्रान, दिस इज रिच सोर्स ऑफ फॉस्फोरस. ठीक है. फॉरेजेस मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल जो प्लांट खाते हैं, सो दीज आर फॉरेजेस. और फॉरेजेस में भी बहुत सारे मिनरल्स एंड वाइटामिन्स होते हैं. अनदर वन इज मिनरल सप्लीमेंट सच एज बोन मिल, मिनरल मिक्सचर, कॉमन साल्ट, कैल्साइट. बोन मिल का मतलब क्या हुआ? बोन मिल जैसे कि अभी तो नहीं होता है, या इट कैन बी बोन इज मेड अप ऑफ, बोन ऑफ एनी लिविंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ, किस चीज से बना हुआ होता है? कैल्शियम. कैल्शियम. कैल्शियम फॉस्फोरस. वेरी गुड. कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम. तो इस बोन को अगर हमने यूज किया किसी भी तरह से, देन इट कैन बी ए पार्ट ऑफ दैट इट कैन बी ए पार्ट ऑफ मिनरल. कि अगर हमने उसको बोन मिल अगर यूज किया तो इट कैन बी यूज एज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. मिनरल मिक्सचर मीन्स मैन मेड मिक्सचर जिसमें कि सारे मिनरल्स को हम ऐड कर देते हैं. अगर सपोज करो इफ यू रिक्वायर फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरिक एसिड और डाइकैल्शियम फॉस्फेट. Likewise, iron we require ferrous sulfate, copper you require copper sulfate, iodine we require potassium iodate. ठीक है. Likewise, common salt is a source of sodium and chlorine. Calcite, that is calcium carbonate, source of calcium. Cell grit, this is again source of calcium. So drinking water also, although it also contains some minerals, sometimes it's toxic. लेकिन सॉइल कंटामिनेशन ऑफ हर्बेज सोर्स फॉर ग्रोजिंग, सॉइल से जो आ जाते हैं हर्बेज में, या यूं कह लो कि एक एनिमल खा रहा है. लास्ट पोर्शन पॉइंट जो ये है कि एक एनिमल जो है वो ग्रेज कर रहा है, और ग्रेजिंग के साथ साथ वो जैसे ही प्लग किया तो प्लांट पूरा का पूरा आ गया, तो उसके साथ जो सॉइल होता है वो भी थोड़ा उसके इनटेक में चला आता है, एंड इट इज आल्सो सोर्स ऑफ मिनरल्स. और इसके लिए एक सवाल बाद में पढ़ाएंगे. इन केस ऑफ पिगलेट, या यूं कह लो कि जो पिगलेट एनीमिया एक बहुत बड़ा डिजीज है जो कि बच्चों में होता है, बिकॉज मदर मिल्क इज डिफिशिएंट इन, माँ का मिल्क जो होता है उसमें सब कुछ होता है, और क्या नहीं होता है पहले भी बोला था किसी भी मदर में. वन इज विटामिन सी, ठीक है, एंड अनदर वन इज आयरन. आयरन बहुत कम होता है हर एक में, एंड दिस इज द रीजन जो पिगलेट्स होते हैं, जो शुगर के बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनीमिया हो जाता है. एंड उसके पीछे रीजन यही है कि मदर का मिल्क जो है वो डिफिशिएंट इन आयरन है, और बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती.
सो दिस इज द रीजन। तो मैं अभी बात कर रहा था कि बताया जाता है कि अगर आपने सो को यानी कि उसके मदर को आपने ग्रेजिंग में रखा या सॉइल पे रखा तो ये वाला जो पिगलेट एनीमिया है उसके चांसेस कम होते हैं। ठीक है, इसके पीछे रीजन यही है कि जैसे ही आप सॉइल पे रखते हैं तो कंटामिनेशन होता है और वो ग्रेजिंग करके या थोड़ा सा सॉइल मुंह में अगर चला जाता है तो रिच सोर्स ऑफ आयरन हो जाता है। ओके, सो दीज आर डाइटरी सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। अनदर वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मिनरल यूटिलाइजेशन और रिक्वायरमेंट। यू नो, मैं अगर आपसे पूछूं कि एक कैटल है, एक एक जो कि एक मिल्किंग काउ है और दूसरी जो है वो नॉन मिल्किंग है, तो उसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट किस में ज़्यादा होगी? अनीशा, दो कैटल है, एक दूध दे रही है गाय और दूसरी दूध नहीं दे रही है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट किस में ज़्यादा होगी? सर सिंपल। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो लैक्टेटिंग का होगी, जो दूध दे रही है उसमें ज्यादा वेरी होगी। गुड। तो ये एक फैक्टर हो गया ना कि फिजियोलॉजिकल स्टेज ऑफ लाइफ इज वन फैक्टर, कि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसके आउटपुट ज़्यादा हो रहे हैं, कैल्शियम मिल्क में ज़्यादा ड्रेन हो रहा है। अगेन अंकित, अगर मैं पूछूं कि ब्रॉयलर और लेयर में, ब्रॉयलर समझते हैं आप चिकन में? सर ब्रॉयलर, यस सर। ब्रॉयलर और लेयर मतलब जो मीट के लिए होता है और एक जो एग के लिए, उसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट किस में होगी? सर लेयर में। क्यों? सर क्योंकि वो मतलब जो मतलब क्योंकि उसको अंडा देना है तो सर उसमें कैल्शियम तो उसका सेल मतलब स्ट्रांग होगा सर। वेरी गुड, यानी कि सेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? यस सर। सेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। likewise गिरजा, in case of pregnant lady और या यूं कह लो कि प्रेग्नेंट है और एक ड्राई है या है, तो उसमें आयरन किसका रिक्वायरमेंट हाई होगा? प्रेग्नेंट कैटल और ड्राई कैटल, आयरन रिक्वायरमेंट किस में हाई होगा? सिंपल, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा होगी बिकॉज अगेन इट इज टू बी ट्रांसफर टू बेबी। एनीवे, तो ये हो गया कि वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। दूसरा चीज़ होता है इंटर रिलेशनशिप। अब जैसे आपने, मैं दो ही एक ही यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, कैल्शियम फास्फोरस रेशियो पढ़ा होगा, कितना रेशियो होना चाहिए? नेहा, नेहा आर एस कुमारी, what should be the optimum calcium and phosphorus ratio? Sir, 1:2. What should be one? Sir, calcium. स्नेहा, थोड़ा सा करेक्ट करो। अब स्नेहा, क्या होना चाहिए रेशियो? सचिन, नीलेश, सर कैल्शियम 2 और फास्फोरस 1। या ठीक है, तो ये आपने उल्टा बोला ना कि 2:1। इसके पीछे रीजन यही है कि अगर आपने कैल्शियम बहुत ज़्यादा हाई किया तो फास्फोरस की यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी। तो दिस इज इंटर रिलेशनशिप। आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो अगर आपने हाई कर दिया तो दूसरे के यूटिलिटी को कम कर देता है। एंड दिस इज द फैक्टर वी शुड मेंटेन रेशियो proportion of minerals to excel or rather improve the utilization of each and every minerals. Presence of antimicrobial, antimetal compounds, या यूं कह लो कि टॉक्सिक फैक्टर पढ़ रहे हो, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पढ़ोगे, क्वेश्चन अंदर जिन्हें पढ़ाया होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल ऑक्जिलेट, सुना है आपने? ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट दिस इज कंपाउंड, सिंपल केमिस्ट्री। यस सर। ऑक्जिलेट किस मिनरल्स को बाइंड करेगा? बोलिए। कैल्शियम ऑक्सीलेट। Calcium. वेरी कैल्शियम गुड, ऑक्सीलेट। वेरी गुड। तो इसका मतलब कि अगर किसी कंपाउंड में, किसी फीड में ऑक्जिलेट ज़्यादा है तो क्या होगा? कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को वो बढ़ा देगा, यानी कि कैल्शियम के यूटिलाइजेशन को कम कर देगा, क्योंकि वो कैल्शियम ऑक्जिलेट बना देगा। और ये आप ऐसे भी जानो कि जो आपके बॉडी में जो आप स्टोन कहते हो, सिस्टोलिथ कहते हो, ये क्या किससे बनता है? ऑक्जिलेट से ही तो बनता है। धीरे 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 क्रस्ट बनते हुए बन जाते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर ऑक्जिलेट ज़्यादा है देन इट विल इंक्रीज दी यूँ कह लो कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, या यूँ कह लो कि डिक्रीज दी यूटिलाइजेशन हो। फाइटेट्स का नाम सुना है? फाइटिक एसिड, नो।
Again, phytic acid is a compound. Phytic acid is a compound which binds with phosphorus. किसको बाइंड करता है ये? फॉस्फोरस को बाइंड करता है, और यूजुअली ये सारे के सारे प्लांट्स में मौजूद होते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग फाइटेट फॉस्फोरस। ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, इवन इन केस ऑफ विटामिन्स। अनदर वन इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ मिनरल इन द डाइट अफेक्ट्स यूटिलाइजेशन। हाउ? एक्चुअल अमाउंट ऑफ मिनरल, सपोज करिए कि आप बहुत ही डिप्लीटेड हो, या यूं कह लो कि मिनरल्स आपके बॉडी में वो मिनरल्स कम है, तो कम है तो क्या होगा, इसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी। ये एक सिंपल बायोलॉजिकल फेनोमेना है कि उसकी रिक्वायरमेंट हाई है लेकिन बॉडी में कम है, तो जैसे ही आप देते हो तो इसकी यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगी। लेकिन अब आपका बॉडी फुलफिल कर लिया, उसके बाद अगर आप एडअप करते हैं तो उसकी यूटिलाइजेशन कम होगी, और उसके अबव आप अगर देना करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन शुरू हो जाएगा। अनदर वन इज मिनरल स्टेटस ऑफ एनिमल। दोनों एक ही चीज हो गई कि अगर रिक्वायरमेंट जितनी है उससे अगर आपने कम दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो यूटिलाइज अच्छा करेगा। फॉर्म ऑफ मिनरल, जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे पूछता हूँ कि कॉपर का, तो कॉपर का सल्फेट हो सकता है, और ढेर सारे कंपाउंड हो सकते हैं। कैल्शियम के भी कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है। ठीक है। तो लेकिन ये देखा गया है कि एनिमल में इसकी बायोबिलिटी जो होती है, यानी कि जो कंपाउंड में तो मिनरल्स हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन है वो किस पर होता है, वो एनिमल पर डिपेंड होता है कि वो कैसे उसको यूटिलाइज कर पाता है। तो सोर्स डिफरेंट होने से उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है या उसकी यूटिलाइजेशन चेंज हो जाती है। अनदर वन इज, जो इसमें दिख नहीं रहा है, मैं फिर दिखा रहा हूँ। This is animal factor: age, sex, productivity level, genetic makeup, etc. Like age, यंग एज में किसी भी न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन क्या होता है, वो हाई होता है। जैसे जैसे एज प्रोसीड करते जाता है, जैसे जैसे ओल्डर एज में जाता है, उसकी एक तो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और उसकी यूटिलाइजेशन भी हो जाती है। अनदर वे इन प्रोडक्टिविटी, एज फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मिल्किंग में कैल्शियम रिक्वायरमेंट और कैल्शियम यूटिलाइजेशन विल बी हायर एज कंपेयर टू नॉन मिल्की। जेनेटिक मेकअप, समटाइम्स high growing animal, high genetic potential animal has better utilization of minerals, rather all nutrients, as compared to non-producing or low genetic makeup. So these are some factors which affects mineral utilization, like a strong interrelationship between. Another is antimicrobial metal compound or anti-nutritional factors, actual amount of minerals in the diet, mineral status of animal, physiological status of non, form of minerals. Even one more factor is that is soil condition. Suppose a plant, an area is deficient in calcium. An area is deficient in calcium means that area contains less quantity of calcium in soil. What does this mean? This plant growing on that area will have less quantity of calcium, and that less quantity will be utilized by, or rather will be consumed by animal. Then animal will also have less quantity of minerals in their blood, and then simultaneously product of that animal will contain less quantity of calcium. This means there is again a factor, rather you can say a topic, that is soil plant animal relationship. This means soil regulate the utilization, rather requirement of mineral. Am I clear? So these are some factors which affects utilization. I can ask this in this at short notes or long answer. Any confusion up to? I will No, leave, sir. I will leave here because calcium and phosphorus I will be dealing in separate way. Calcium, phosphorus is a big chapter, and I request you to study this calcium and phosphorus from any book. Any unanswered questions or anything you want to ask? कोई सवाल? Anything to? No. Can I ask one question? Which is the first mineral discovered?
question for you. Okay, and who was the person who just used this, either discovered first